has the Prime Minister been abused in this house by them? And how many times he was not even allowed to speak in the house? They stood in the well and shouted. Will the Honorable Member Tarun Gogoi, his son, Gaurav Gogoi, apologize for the number of times they've called abusive names to the PM? Today he's ironing out all that. He's whitewashing all that. That's not allowed. He should have the grace. He should have the grace to admit that they have abused the Prime Minister. It was wrong and they shall not do it again. Very clearly that I have to read the speech. Honorable Finance, I do not expect you. What is this? Stood up here. Honorable, what is this going on? You should not have the patience to listen. Have the patience to listen. You should have the patience to listen. You read through the speech. Have the patience. Look at the way in which all of them are shouting. Now, look at the way in which all of them are shouting. Have the patience. Right? What Gogoi said is wrong? Gogoi said is wrong? Is that what they're saying? Is that what they're saying? If Gogoi had the large-heartedness to say that we should not abuse anybody, what's going on? So that shows the attitude of the Congress party. When democracy is officially dead in a state of this largest democracy, they are forced to debate on Manipur today because President's rule has been imposed in the state of Manipur. मैडम, मणिपुर के मुद्दे पर पिछले 22 महीनों में विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए। कभी चर्चा ना होने पर हमने वॉकआउट किया तो कभी मकर द्वार पे धरना दिया। लेकिन हमें सबसे ज्यादा उम्मीद जिनसे थी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ना उनके मन में मणिपुर के लिए कोई जज्बा दिखा और ना ही उनके बातों में मणिपुर का कोई जिक्र उठा। 600 दिनों से ऊपर चल रही एथनिक वायलेंस मैडम, 240 से ऊपर मणिपुर के भाई और बहनों की मौत, 1500 से ज्यादा जख्मी लोग, more than 5,600 arms, 6.5 lakhs rounds of ammunition looted from police armories, करीबन 68,000 इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, 13,000 से ज्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज, कई लापता लोगों की डायरी, लगातार दहशत की खबरें, फिर भी सरकार ने अपनी चुप्पी मणिपुर पर नहीं तोड़ी। Madam, in the past 22 months, every individual has taken to the streets of Manipur protesting and demanding peace. The apex student body of the Northeast staged a protest against the Prime Minister and the Home Minister for their failure to handle the crisis. The Indigenous Tribal Leaders Forum, the Kuki Front, organized a mass rally alleging that the central agencies were cherry-picking in order to appease the majority community at the expense of the minorities. Madam, कल तक मैतेई कम्युनिटी के महिलाओं ने प्रोटेस्ट स्टेज किया और होम मिनिस्टर को अर्ज किया कि आप जाएं और मणिपुर में शांति लाएं। अध्यक्ष महोदय, कम्युनिटी चाहे कोई भी हो, मणिपुर के लोग हमारे अपने लोग हैं और हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि whether you like this fact or not, मणिपुर इस देश का ही हिस्सा है। मैम, 550 से ज्यादा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, police officers, activists, lawyers, filmmakers, journalists, academics, writers, they had to unitedly issue a public statement urging the Honorable Prime Minister to speak out about the ongoing ethnic violence in Manipur, but there was pin-drop silence from the Prime Minister's end. और जब वो पहली बार बोले तो उन्होंने मणिपुर के अब के हालात के लिए कांग्रेस की तब की सरकार को कोसा, जबकि मणिपुर में डबल इंजन उन्हीं की चल रही थी। Sir, only a few empty words were spoken by the Prime Minister and not even a single substantial step was taken by the central government to handle the Manipur crisis. It was the widespread reporting of this shameful incident of public humiliation of 2 tribal women which led to the judicial intervention of the Supreme Court demanding accountability from the state government. And unfortunately, the United Nations too raised alarms about the blatant abuse of human rights in Manipur, citing reports of extrajudicial killing and sexual violence. What is the point? What is the point? What is the point of discussing Manipur, madam? What is the point of discussing the budget of Manipur? Manipur has experienced higher inflation rates every month since violence broke out in the state. 70% of Manipur lives in the villages with a monthly inflation rate of 10 to 12%, the highest inflation among all states in the country.
youth employment in Manipur is at 23%. मंत्री जी, मणिपुर पर इसी सदन में बार बार बातें रखी गई, नहीं रखी गई, रखी स्पीच Sorry, sir. रखी गई, गलत बात है। और गृह मंत्री जी भी, प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषण के क्रम में वहां की स्थिति को बड़ी स्पष्टता के साथ रखे हैं। इस तरह के बयान करके, गुमराह करके, अराजक स्थिति पैदा करने के लिए जो मणिपुर शांति की ओर बिल्कुल बढ़ चुका है, उसके लिए महोदय सदन में इस तरह से क्यों बोला जा रहा है महोदय? Budget for healthcare slashed by 23% and 11.5%, and budget for education slashed by 17% and 5.6% in the past 2 years. Budget for nutrition has been cut by 25%. Social security spending for tribal communities have seen a massive cut of 47%. And price rise is bleeding every family dry, no matter what their ethnicity be. What has the Manipur budget demands of grant proposed for reducing inflation and ease supply chain for the network of the state? Approx 6,164 children between 6 months to 6 years, 2,638 adolescent girls, 232 pregnant women, 753 lactating mothers are currently living across 325 camps in Manipur. By April 2024, 554 babies were born in relief camps since the violence erupted, including 2 maternal deaths as per official data. Madam, media reports के अनुसार चुराचंदपुर के एक रिलीफ कैंप में 80 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है, कभी ट्रॉमा तो कभी मैलन्यूट्रिशन तो कभी बीमारी से। एक 36 साल के नौजवान ने एक रिलीफ कैंप में अपनी खुद की जान ले ली। 665 days of continuous conflict assaulted the well-being of 30 lakh people of Manipur. Youth has no future. Women and children are cramped in the relief camps. Elderly says that they have no hope for the future. आज बंगाल में एक मच्छर भी मरता है तो बीजेपी वाले वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल बोल के चिल्लाते हैं, लेकिन जब तक आपके डबल इंजन राज्य में आपके ही मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तब तक आपको ख्याल नहीं आया कि जिंदगी धूप तुम घनास आया। मैडम, my humble question is, if president's rule was the solution, why was it not imposed months ago, when people were continuously dying and houses were set ablaze? After allowing Manipur to burn for months, today you are here with a bouquet of rosy promises. Please remember, Madam, please remember, Madam, please remember कि फिर नहीं रूल जो है 66, 67 एंड 68 प्रेसिडेंट रूल जिसकी ये बात कर रही हैं, वो आइडेंटिकल बिल है जो कि इस हाउस के पास है। प्रेसिडेंट रूल पर डिस्कशन होने वाला है, इसीलिए इनको फाइनेंस बिल पर केवल फाइनेंस की बात करनी है। नो प्रेसिडेंट रूल पर बात होनी है। वो बिल यहाँ है, वो बिल यहाँ है। मैडम, आफ्टर अलाउइंग मणिपुर टू बर्न फॉर मंथ्स, today you are here offering bouquet of rosy promises. Please remember, फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब, कब्र कितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता। Please remember this. Madam, this was imposed not to restore peace, but to salvage the BJP's political reputation after months of inaction. This is the truth. This is the truth. प्रधानमंत्री जी ने 2022 जनवरी के बाद मणिपुर में अपने कदम नहीं रखे, लेकिन इस बीच 40 बार इंटरनेशनल और 244 बार डोमेस्टिक ट्रिप्स लगाए। अमित शाह जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, सिर्फ 2 बार गए। माननीय प्रतिरक्षा मंत्री 1 बार गए। माननीय वित्त मंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट तो गए ही नहीं। There is a saying called "Nero fiddled while Rome burned", अर्थात आग लगी बस्ती में, साहब अपनी मस्ती में। मैडम, सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि पापा दूसरे देश की वॉर रुकवा सकते हैं, बट why was not a second given to comfort the people of Manipur? As per Madam, as महोदय, यह सदन please don't take it personally, sir. पर खड़ा होकर बोलने का नहीं है, और उनको पता नहीं है कि जब गृह मंत्री जी वहां गए